गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो आज का पहला टॉपिक है टंगस्टन माइनिंग नियर मदुराई। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने टंगस्टन माइनिंग का राइट्स दिया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को, जो कि एक वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी है। मेलूर रीजन जो है मदुराई का, वहाँ पर ये माइनिंग करने के लिए दिया है। ठीक है। तो ये लगभग 2015 हेक्टेयर का ये रीजन है और ये शीलाइट के डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। पेरियार कनाल को है आइडेंटिफाई किया गया है कि वो इस माइनिंग ऑपरेशंस के लिए वाटर सोर्स बनेगी। ठीक है। तो टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन जो है वो एक रेयर हैवी डेंस मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है होता है अमंग ऑल नोन मेटल्स। तो ये अपने एक्सेप्शनल हार्डनेस और रेसिस्टेंस टू हीट के लिए फेमस है। ठीक है। ग्रेइश वाइट लस्ट्रस मेटल होता है ये अपनी प्योर फॉर्म में। इसको हम क्रिटिकल मिनरल कंसिडर करते हैं। इसको कटिंग टूल्स, ड्रिल्स, अब्रेसिव्स में यूज़ किया जाता है, फिलामेंट्स में यूज़ किया जाता है, लाइट बल्ब्स, एक्सरे ट्यूब्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में। इसको अलॉय बनाकर बाकी के मेटल्स के साथ हाई स्ट्रेंथ मिलिट्री ग्रेड आर्मर के लिए यूज़ किया जाता है, एरोस्पेस कंपोनेंट्स में यूज़ किया जाता है, और इसको मिसाइल की टिप्स बनाने में, रेडिएशन की शील्ड बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। मेडिकल इमेजिंग डिवाइस हो गए, विंड टर्बाइंस हो गई, इन सब में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। तो टंगस्टन जो है इंडिया में राजस्थान में देगाना माइंस है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इसके प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं। फिर शीलाइट डिपॉजिट्स आपको श्रीकाकुलम में भी मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, और चित्रदुर्ग और मैसूर रीजन में भी कर्नाटका के ये आपको डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। तो इंडिया जो है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन अपने टंगस्टन रिक्वायरमेंट्स का इंपोर्ट करता है। ठीक है। और अगर हम इंटरनेशनली देखें तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा जो है टंगस्टन के रिजर्व्स हैं, लगभग 80% ग्लोबल प्रोडक्शन चाइना ही कंट्रोल करता है। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई है? तो इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि जो ये मदुराई वाली जो माइन है, अगर आप यहाँ माइनिंग करते हो तो उससे फ्लोरा फौना और कल्चरल लैंडमार्क्स को, इंक्लूडिंग एंशियंट टेम्पल्स और जैन रेलिक्स को हार्म हो सकता है। हार्मफुल मेटल्स जो है वो इधर से जो रिलीज होंगे वो ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को थ्रेट पोज करेंगे। ठीक है। एक्टिविस्ट का ये भी कहना है कि वेदांता का जो इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड है वो वैसे भी ख़राब ही है, और जो रीजन है वो रिच है हेरिटेज में। तो यहाँ पर लोकल्स को डर लग रहा है कि माइनिंग से उनकी कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो डिस्टॉर्ट ना होने लग जाए। ठीक है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने भी यूनियन गवर्नमेंट को कहा है कि इस माइनिंग राइट्स को कैंसिल किया जाए, और कहा कि ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। ओके। लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कहा कि जब ये ऑक्शन प्रोसेस हो रहा था तब तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बोला, और अब वो इन्वायरमेंटलिस्ट के कहने पर जो है ये इसकी अपोज कर रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, टैकलिंग बैकलॉग ऑफ केसेस। टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने वो सब्सटेंशियल बैकलॉग ऑफ केसेस फेस कर रहा है। लगभग 82,000 केसेस पेंडिंग है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ रिफॉर्म्स इस चैलेंज को मैनेज करने के लिए, जो कि प्रायोरिटाइज करना चाहते, जिसमें कि प्रायोरिटाइज किया जा रहा है स्पेशल लीव पटिशंस को, ताकि उनकी रेजोल्यूशन को एक्सपेडिट किया जा सके। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो है पावर अलाउ करती है कि कोई भी तरह की अपील, चाहे किसी जजमेंट से हो, डिक्री से हो, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस या ऑर्डर से हो, किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का इंडिया में, वो सुप्रीम कोर्ट के पास एसएलपी की पावर उसको दोबारा से हेयर करने के लिए आती है, एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स या कोर्ट मार्शल्स। ठीक है। तो अगर कोर्ट को लग रहा है कि कुछ ग्रॉस इनजस्टिस है या फिर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से डील कर रहे हैं, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन को वो अलाउ कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो एक्सेप्ट करें या डिक्लाइन करें इनको। ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट के जजमेंट्स के अगेंस्ट स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की जा रही है तो 90 दिन के अंदर डेट ऑफ जजमेंट के वो फाइल करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल कैसे करते हैं, एसएलपी को, मैं आपको पहले पूरे रेलेवेंट फैक्ट्स और ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि क्यों वो आपकी इस अपील को इवेल्युएट करें। पटिशन को साइन किया होना चाहिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा, और अपोजिंग पार्टी को भी जो है वो अलाउ किया जाता है कि वो भी रिस्पॉन्ड कर सके काउंटर एफिडेविट देके। और सुप्रीम कोर्ट फिर डिटरमिन करता है कि क्या इस केस को दोबारा खोलने की ज़रूरत है, और अगर पटिशन में कोई मेरिट नहीं लगती कोर्ट को तो कोर्ट इसको डिसमिस भी कर सकता है।
तो एक तरह से एग्रीव्ड पार्टीज़ को एक एवेन्यू फॉर जस्टिस मिल जाता है। सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ या ग्रॉस इनजस्टिस या ग्रेव इनजस्टिसेस हो रहे हों, तो उसको बचाया जा सकता है स्पेशल लीव पिटिशन से। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड भी इससे बैलेंस हो जाता है, ठीक है। एसएलपीज जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो होती हैं, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनी जाती हैं। लगभग 14% ही एसएलपीज जो फाइल जितनी फाइल होती है उसकी सिर्फ 14% ही सुप्रीम कोर्ट सुनता है। और एम ये रहता है कि जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाए एडमिशन स्टेज पर ही, ताकि बैकलॉग जो है वो जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सके। तो ब्रीफ हेयरिंग्स जो हैं एसएलपीज की, वो डिलेज को रिड्यूस कर रही हैं। लगभग सिर्फ 1.5 मिनट ही जो है वो एसएलपीज की ब्रीफ हेयरिंग्स चलती हैं। फुल हेयरिंग्स जो है उसमें तो कई बार 4 साल तक लग जाते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट फोकस कर रहा है एसएलपी के ऊपर, और एक बार एडमिट कर ली अगर एसएलपी, तो केसेस जो है वो फाइनल हियरिंग्स के लिए डिटेल्ड सुने जाते हैं, और फिर उसके बाद ही वर्डिक्ट डिलीवर किया जाता है, ओके। तो कुछ डेज़ का चेंजेस किए जा रहे हैं इसमें, ताकि जो है बैकलॉग को रोका जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेनेटिक हेरिटेज ऑफ द निकोबारीज। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यू स्टडी रिवील कर रही है कि निकोबारीज जो हैं वो जेनेटिकली क्लोज हैं, साउथ और साउथ ईस्ट एशियंस के करीब है ज़्यादा जेनेटिकली। खासकर ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज स्पीकिंग तिन माल कम्युनिटीज़ जो हैं थाईलैंड और लाओस की। तो निकोबारीज जो ट्राइब्स हैं वो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ कम्युनिकेशन चैनल्स भी ओपन किए हैं, खासकर जरावास के साथ, ताकि उनके कंसर्न्स और फ्यूचर नीड्स को अंडरस्टैंड किया जा सके। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आइज़ ऑन एंड हैंड्स ऑफ पॉलिसी जो है वो यूज़ करती है सेंटिनलीज ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में, जिसमें कि सिर्फ सरकम नेविगेशन की जाती है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके, ताकि पोचिंग या फिर ट्राइब की ताकि जो सेंटिनलीज ट्राइब्स हैं उनके आइसोलेशन को मेंटेन किया जा सके। तो ये तीन माल कम्युनिटीज़ कौन सी हैं? ये साउथ ईस्ट एशिया में रिजाइड करती हैं। अपने डिस्टिंक्ट एथनिक आइडेंटिटी और जेनेटिक एफिनिटी विद निकोबारीज पीपल के लिए नोन है। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस बोलते हैं ये। जेनेटिकली सिमिलर हैं ये निकोबारीज के, ओके। तो अगर हम देखें स्टडी के बारे में, तो न्यू जेनेटिक रिसर्च जो निकोबारीज पॉपुलेशन पे की गई है सीएसआईआर द्वारा, वो एक्सप्लोर कर रही है कि उनके एंसेस्ट्री और जो जेनेटिक एफिनिटीज़ हैं वो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन के साथ ज़्यादा मैच करती हैं। 25,000 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकोबारीज पॉपुलेशन जो है उनके सिग्निफिकेंट एंसेस्ट्रल कनेक्शन देखने को मिले हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक पीपल के साथ, जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं पिछले 5,000 साल से। तो ये स्टडी कॉमन जेनेटिक एफिनिटी दिखा रही है तिन माल कम्युनिटी के साथ, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में ही रहती है, और उनके निकोबारीज के साथ कल्चरल एफिनिटी है, ओके। तो निकोबारीज ट्राइब अगर हम देखें, ये निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं ईस्टर्न इंडियन ओशन के। ये ट्राइब जो है निकोबार आइलैंड्स में 4500 से 5000 साल पहले के आसपास यहाँ पर आए हैं। निकोबारीज धीरे धीरे डिफरेंटली इवॉल्व हुए हैं, वो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड लाइवलीहुड में इन्वॉल्व हैं। निकोबारीज जो है उन्होंने अपनी जेनेटिक लीनेज, लैंग्वेज और एथनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखा है और आइसोलेटेड रखा है मेनलैंड पॉपुलेशन से। निकोबारीज जो है वो लगभग 25,000 के आसपास हैं अभी, और वो फॉरेस्टेड एरियाज में ही रहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रू टैग इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली फर्स्ट एनुअल रिव्यू मीटिंग रखी गई है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप 2.0 प्रोजेक्ट्स के लिए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में, ओके। तो ये रू टैग इनिशिएटिव ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, 2004 से चल रहा है, जिसमें कि हायर लेवल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन और सपोर्ट दिया जाता है रूरल एरियाज़ को। अब फोकस क्या रहता है कि जो ग्रास रूट लेवल पर है उन पे जो है टेक्नोलॉजी गैप्स को हम ब्रिज कर सके और उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके। जो इनोवेटिव कोई प्रोडक्ट है उसको कैसे मार्केट रेडी बनाना है और उसका बेनिफिट कैसे रूरल एरियाज़ तक पहुंचाना है, उस पर भी इसका इनिशिएटिव का फोकस रहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस फॉर लैंड फोरम जो है COP16 की कॉन्फ्रेंस में उसमें प्राइवेट सेक्टर को अर्ज किया गया है कि वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड को एक की पार्ट बनाएं कॉरपोरेट और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का। तो ये UNCCD का इनिशिएटिव है,
जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जा रहा है सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट में। तो ये कल कंपनीज़ को हेल्प करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करेगा कि कैसे मैनेज किया जाए रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे सीज़ किया जाए, ठीक है। तो लगभग 1.5 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बाय 2030 रिस्टोर करने का प्लान है। तो जो वर्क है वो बिल्ट है अराउंड 3 पिलर्स। पहला है बिजनेस ऑपरेशंस एंड वैल्यू चेन्स, जिसमें कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा रहा है, ओके, और टारगेट्स को सेट किया जाएगा। दूसरा है फाइनेंस, कि कैसे सस्टेनेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस दिए जा सकें लैंड रिस्टोरेशन पर। एडवोकेसी मतलब पॉलिसीज़ जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है कंड्यूसिव बनाया जा सके और सस्टेनेबल लैंड और वाटर मैनेजमेंट पर उनको कैसे एडवोकेट किया जाए, ठीक है। तो यूएनसीसीडी क्या है? 1994 में इसको एस्टैब्लिश किया गया ताकि प्रोटेक्ट और रिस्टोर किया जा सके अपने लैंड को। ये अकेला लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो कि एड्रेस करता है डिजर्टिफिकेशन को और इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम ई विद्या। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जो है उन्होंने पीएम ई विद्या के लिए एक डीटीएच चैनल लॉन्च किया है, जो कि इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए चैनल है। न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये पीएम ई विद्या इनिशिएटिव क्या है? पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और ये एम करता है कि डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया जा सके थ्रू डिजिटल ऑनलाइन एंड ऑन एयर प्लेटफॉर्म्स, तक ताकि लर्निंग लॉसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये इसका विजन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट करना। इस इनिशिएटिव के अंदर टेक्नोलॉजी को लीवरेज किया जा रहा है ताकि एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया जा सके ऑल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? दीक्षा, फिर आपका पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल्स, स्वयं, रेडियो कम्युनिटी पॉडकास्ट सीबीएसई के जो शिक्षावाणी है, फिर ई कंटेंट दिया जाता है टीचर्स को, ठीक है। तो एक इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए ये डीटीएच चैनल 31 जो है पीएम ई विद्या स्ट्रीम के अंदर डिवोट किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉपरनिकस प्रोग्राम। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली थर्ड कॉपरनिकस सेंटिनल 1C सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है लास्ट नाइट अबॉर्ड वेगा सी रॉकेट, यूरोप के स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयाना से। कॉपरनिकस प्रोग्राम अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपोनेंट है यूरोपियन यूनियन के स्पेस प्रोग्राम का। ये ऑफर करता है इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो कि ड्रॉ करती है सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड इन सीटू स्पेस डेटा, नॉन स्पेस डेटा। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि डेटा जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सके। कॉपरनिकस जो है वो कई डेडिकेटेड सैटेलाइट्स द्वारा जो है ऑपरेट होगा, जिसको हम सेंटिनल फैमिली कह रहे हैं। तो इसमें जो है 6 थीमेटिक एरियाज होंगे: एटमॉस्फेयर, मरीन, लैंड, क्लाइमेट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और सिक्योरिटी। तो जो सेंटिनल 1C है ये हाई रेजोल्यूशन रडार इमेजेस भेजेगी अर्थ को के चेंजिंग इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गेट एनालिसिस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो गेट एनालिसिस जो है उसकी वजह से 7 मंथ ओल्ड जो एक रेपिस्ट है उसको बंगाल में पकड़ा गया है। तो गेट एनालिसिस क्या होता है? एक असेसमेंट होता है कि कैसे बॉडी मूव हो रही है, ठीक है। बाई रनिंग या वॉकिंग देखा जाता है, ठीक है। पर्पज़ इसका क्या होता है कि किसी भी तरह की अब नॉर्मेलिटीज़ या जो है लोकोमोशन में या मूवमेंट में उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो गेट एबनॉर्मेलिटीज़ जो है उसमें अनयूजुअल वॉकिंग पैटर्न्स को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, जो किसी भी डिसीज़ या इंजरी की वजह से हो सकते हैं। इरेगुलरिटीज़ से पेन जो है हिप में, बैक में, नेक में, फीट में, नीज़ में या एंकल्स में देखने को मिलती है। तो अब ऐसे क्राइम्स में जो है आप देख सकते हो कि अगर कोई पर्सन को कोई क्लू हो कि हाँ इस पर्सन को जो मेरा रेपिस्ट था उसको ये प्रॉब्लम थी चलने में, तो उससे जो है या फिर कोई चोट लगी थी उस पर्टिकुलर एक्ट के टाइम पर, तो गेट एनालिसिस से पता लगाया जा सकता है कि जो ये अक्यूज्ड है या फिर जिसके ऊपर जो है शक है क्या ये वही पर्सन है या नहीं, ठीक है। तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जाती है, एक इंडिविजुअल किस तरह से खड़ा हो रहा है या चल रहा है, उससे जो है वो आइडेंटिटी पता लग सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट का, वो फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट को मिल रहा है, मिशेल बैशलेट को। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है इसको हम इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इसको 1986 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 25 लाख रुपए मिलते हैं इसमें और साइटेशन मिलता है। इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने काम किया है इंटरनेशनल पीस और डेवलपमेंट के लिए, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो
जो पुराने फेमस रेसिपिएंट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। उनमें से एक नोटेबल नाम है इसरो भी, ठीक है, जिसको 2014 में ये प्राइज़ मिला है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is tungsten mining near Madurai. Okay, so this is not Mumbai, it's Madurai. So this topic is important for your environment and your economy section. So Union Ministry of Mines has recently awarded tungsten mining rights to Hindustan Zinc Limited, which is a subsidiary of Vedanta Limited, and it is being chosen as because this site is biodiversity rich, and uh, Melur region of Madurai is the place where this mining would be happening. So this is about 2000 plus hectare land or tungsten block, which is known for its deposits of scheelite, which is a primary tungsten ore. And the Periyar Canal has been identified as the water source for the mining operations of this site. Okay. So what is tungsten? It's a rare, heavy and dense metal with the highest melting point among all known metals. It is known for its exceptional hardness and resistance to heat, corrosion and wear. So it is grayish white, lustrous metal in its pure form. It is considered as a critical mineral due to its indispensable role in defense, high-tech industries, and clean energy applications. It is used in cutting tools, drills, and abrasives due to its hardness and heat resistance. Okay, it is also used as filaments in light bulbs, X-ray tubes, and electrical contacts. It is also used in alloy with other metals for high strength military grade armor and aerospace components. It is also used in missile tips and radiation shielding due to its density. Okay, it is utilized in medical imaging devices and as radiation shielding material in cancer treatments. It is also used as an important element in the wind turbines and production of superalloys for energy and technology sectors. So in India, we have the Degana mines in Nagaur district of Rajasthan. Then we have the scheelite deposits in Srikakulam district of Andhra Pradesh. We also have Chitradurga and Mysore regions of Karnataka, which have this tungsten. And India still imports a significant portion of its tungsten requirements due to the limited domestic production. And China holds the largest tungsten reserves, and it accounts for almost 80% of the global production. Okay, so why it is this project is being opposed? So environmentalists are arguing that mining could harm flora, fauna, and cultural landmarks, including ancient temples and Jain relics in this site, and it may also release harmful metals like arsenic, cadmium, and lead, which may pose risk to human health and environment. Activists are also criticizing Vedanta's environmental record, citing pollution from its copper smelting unit in Thoothukudi. Okay, and this region is also rich in cultural heritage. So that's why Tamil Nadu CM has urged the union government to cancel the mining rights. State government is also claiming that it has informed the center about the biodiversity heritage sites existence during land discussions. But the Union Ministry of Mines is saying that when the mining allocation was being done, at that time Tamil Nadu government did not make any opposition, but now it is raising the same due to environmentalist concerns, okay, and local politics. So this tungsten mining project in Madurai underscores the complex balance between resource exploitation and environmental preservation. So the next topic is tackling backlog of cases. This topic is important for your polity section. So Supreme Court of India is facing a substantial backlog with over 82,000 cases pending, and CGI Sanjeev Khanna has introduced certain reforms to manage this challenge, focusing on prioritizing special leave petitions for expedited resolution. So Supreme Court is vested with extraordinary jurisdiction under Article 136 of the Constitution, granting it the power to entertain SLPs. So um, it also allows appeals from any judgment, decree, a determination, sentence, or order made by any court or tribunal in India except military tribunals or court martials. And the purpose is that when this is invoked, uh, substantial questions of law and any gross injustice is addressed. Okay, Supreme Court has the authority to accept or decline these SLPs. So if you are
aggrieved against the High Court judgment, then within 90 days you have to file this SLP with the Supreme Court. This SLP must outline all the relevant facts and grounds for the Supreme Court to evaluate the appeal. Petition must be duly signed by an advocate on record, and the Supreme Court may also hear the petitioner, and if it may also give the hearing to the opposition party, so that they can respond via counter affidavit. Supreme Court will then determine if the case warrants further hearing, and if the petition lacks merit, then the court may dismiss that SLP outright. Okay, so it is an important mechanism which provides aggrieved parties an avenue for justice, so as to ensure that substantial questions of law or grave injustice do not or grave injustices are addressed. So, because of judicial discretion in accepting or rejecting the SLP, it balances the Supreme Court's workload also. Okay, so SLPs are basically appeals against High Court orders, and as per the current statistics, Supreme Court accepts only 14% of such SLPs which are filed with the court. The aim is to prioritize quick decisions on administration stage cases so as to clear the backlog more efficiently. So that's why Chief Justice of India is restricting regular hearings on Wednesday and Thursdays with respect to SLPs. Okay, so we are witnessing that brief hearings for SLPs, which is about just 1.5 minutes, reduce delays, and full hearings for admitted cases take over 4 years. So the court is focusing on how to reduce this backlog. So once SLP is admitted, then case undergoes a detailed final hearing before a verdict is delivered. Okay. So the next topic is genetic heritage to the Nicobaris. This topic is important for your social issues. So a new study has revealed that Nicobaris are genetically close to South and Southeast Asian people, particularly the Austroasiatic language speaking Tin Mal communities in Thailand and Laos. So various steps have been taken for the welfare of these Nicobaris tribes, especially by the Andaman and Nicobar Island Administration, which has established communication channels with the Jarawas to understand their concerns and future needs. This initiative has also enhanced the Jarawas' confidence, leading to improved information about sharing about poaching, encroachment, and abuse. The administration follows an eyes on and hands off policy for the Sentinelese tribes. There is also a circumnavigation protocol around the North Sentinel Island, developed in consultation with the Government of India, which has helped prevent poaching and maintaining the tribe's isolation. Okay, so what is this Tin Mal community? They reside in mainland Southeast Asia, and they are recognized for their distinct ethnic identity and genetic affinity with the Nicobaris people. Tin Mal community speaks an Austroasiatic language. They they are appear genetically similar to the Nicobaris. Okay, so new research has also put focus on this particular fact. This research has been conducted by the scientists from CSIR. Okay, the research has explored the ancestry and genetic affinities of the Nicobaris people with the South and Southeast Asian populations. We have about 25,000 strong Nicobaris population, which have this significant ancestral connection with this Austroasiatic populations. Okay, and Nicobaris tribe people, they inhabit the Nicobar Islands in the eastern Indian Ocean. The tribe migrated to the Nicobar Islands 4,500 to 5,000 years ago, and they have evolved differently, linking their livelihood to agriculture practices, which is prevalent in Southeast Asia during that era. Nicobaris have also preserved their genetic lineage, language, and ethnic identity due to isolation from mainland populations. Okay, the Nicobaris, they number about 25,000, and they thrive in forested areas. So the next topic is RUTAG initiative. This topic is important for your governance section. So the first annual review meeting of the Rural Technology Action Group 2.0 projects was held at the Sher-e Kashmir University of Agriculture Sciences and Technology in Kashmir. So this initiative is an initiative of the Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India, and it was launched in 2004. It was conceptualized as a mechanism to provide a higher level of science and technology intervention and support for rural areas. Under this initiative, the interventions are designed to be primarily demand driven,
focusing on bridging technology gaps at the grassroots level, upgrading technology, and providing training and demonstrations through innovative projects. This initiative, ROOTAG 2 initiative, emphasizes translating innovation into market ready products. Okay, so the next topic is business for land initiative. This topic is important for your economy section and also environment section. So recently at the Business for Land forum at the COP16 conference, the private sector has been urged to make the sustainable management of land a key part of their corporate and financial strategy. So this is an UNCCD initiative which is meant to engage the private sector in sustainable land and water management. It helps companies and financial institutions to manage the risk and seize opportunities tied to land degradation and drought. The aim is, of course, to restore 1.5 billion hectares of land by 2030. So its work is built around three key pillars. First is the business operations and value chains, which will promote sustainable practices. Okay, then the second pillar is finance, so as to support the creation of sustainable finance solutions for land restoration and drought resilience. Then we have this advocacy, for which ad, through which advocacy for policies that foster a business environment conducive to sustainable land and water management will be done. Okay, what is UNCCD? So it was established in 1994 to protect and restore our land and ensure a safe, just, and more sustainable future. So it is the only legally binding framework which has been set up to address desertification and the effects of drought. Okay. So the next topic is PME Vidya. This topic is important for your governance section. So recently, Union Minister for Education has launched this PME Vidya DTH channel number 31 for Indian Sign Language in New Delhi. So it was launched as part of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan by the Ministry of Education, and it is aimed at bridging the digital divide. So PME Vidya provides multi-mode access to education through digital, online, and on-air platforms to minimize learning losses. It also supports the vision of our national education policy. So this initiative leverages technology to make education accessible to all students through several of the components like the Diksha platform, DTH channels, Swayam self-learning platforms, Shiksha Vani, CBSC radio and community radio podcast, e-content for teachers. So this DTH channel is devoted to the Indian Sign Language. Okay. So the next topic is Copernicus program. This topic is important for your science and tech section. So recently the third Copernicus Sentinel-1C satellite was launched from the spaceport of Europe in French Guiana. So it is the third, it is the Earth, what is Copernicus program? It is the Earth observation component of European Union's space program. It offers information services which draw from satellite Earth observation and in situ non-space data. It consists of complex set of systems that collect data from multiple sources, including Earth observation satellites, in situ centers like ground stations, and airborne and seaborne sensors. Copernicus is served by a set of dedicated satellites called the Sentinel family, and the services of Copernicus address mainly six thematic areas, that is atmosphere, marine, land, climate, emergency response, and security. So what is Sentinel-1C? So it will deliver high resolution radar images to monitor Earth's changing environment. Okay, it will also support various applications, advance our scientific research, and it will add new capabilities for tracking maritime traffic. So the next topic is gate analysis. This topic is important for your social issues. So gate analysis has led to the arrest of a 7-month-old rapist in Bengal recently. This gait analysis is basically an assessment of the way the body moves, usually by walking or running from one place to another. The purpose of this analysis is to detect any abnormalities in locomotion. So an individual's gait is a combination of complex functions involving the use of body's visual, somatosensory, and vestibular systems. So gait abnormalities involve unusual walking patterns, which may be caused by disease or injury. Such irregularities can also lead to pain in the hips, back, neck, feet, knees, or ankles. And gait analysis also is known as walking or motion analysis, and it is a comprehensive evaluation of the way an individual stands or walks. So it can help us to identify the source of muscle, nerve, or skeletal problems. It can also help us to discover the source of patient's pain while standing or walking, and it also helps to diagnose bone deformities or skeletal misalignments.
etc. So the next topic is Indira Gandhi Peace Prize. This topic is important for your social issues. So Indira Gandhi Peace Prize for Peace, Disarmament and Development for 2024 will be conferred on the former Chilean president called Michelle Bachelet. So this prize is also known as the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development, and it was instituted in the year 1986. It consists of a monetary award of 25 lakh rupees along with a citation, and it is given to individuals or organizations who work towards ensuring international peace and development. So past recipient list is mentioned here. One that stands out in this list is ISRO, which was awarded this prize in 2014. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.